Today we will discuss a new topic, which is floating point. अच्छा जी. Floating point. This is how decimal points are represented in computing nowadays. Now, to understand this, first we can look into 2's complement. You remember 2's complement we used to represent something like this: 1, 2, 3, 4, 5, 6, and 7. 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, and minus 128. That's how you used to represent integer using 2's complement. In the same way, initially, the decimal numbers were represented as fixed point numbers, in which some of the bits were used for integer part and some of the bits were used for decimal fractional part. Now, for example, if we have an 8-bit register, 1, 2, 3, 4, 5, 6, and 7. Suppose if a programmer thinks of designing fixed point memory and coding it like this: 2 places for the fractional part and 6 bits for the number. The labeling would be something like this: 1, 2, 4, 8, 16, and minus 32. And this will be 1 over 2 and 1 over 4. So if we want to represent a smaller decimal number, that will not be possible because we have only 2 bits available. So it means the combination for decimal fractions will be 0, 0, 0, 1, 1, 0, and 1, 1. So the lowest number decimal fraction we can represent is 0. If both bits are off, we can represent 0.25. I'm just giving the decimal part, okay? You can understand what we can show over here. And so let me just take the zeros away. Okay, 0, 0, 0.25, and 0.50, and 0.75. Now, if we increase the bits for decimal and we decrease the bits for our integer, so in that case we'll be having lesser range of positive and negative numbers and a little bit more bits for decimal numbers. So a little better estimation, precision, accuracy of the fractional part. Now let me show you another example. 1, 2, 3, 4, 5, 6, and 7. Let me put the decimal now here. And 1, 2, 4, 8, and minus 16. So you see, with decimal placing, place decimal at the third place, assuming that it is over here. Obviously, I'm just showing it is over here, but the programmer is just coding it in the way that the 3
bits from the right side will be for the fractional part. So 1/2, 1/4, and 1/8. So that's how the decimal fraction will keep on increasing. मैं लैपटॉप से आ गया हूँ तो मैंने कहा आप रोकना रिकॉर्डिंग इसमें रोकना भी रिकॉर्डिंग हो रही है बच्चों ठीक है okay now we have more combinations. You can understand 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 and then 0 1 1 and so on. So we'll have more decimal places available to actually represent decimal numbers. Now let's come back on this and let's discuss a problem over here, and that is I cannot represent 0.1 with this representation. I cannot represent 0.2 with this representation. I cannot represent 0.3 with this representation. I cannot represent 0.4 with this representation, and many more. I cannot do this. Likewise, here we will have kind of problems where we will not be able to represent many things. And this happens when kind of things happens in this if a hardware is designed in a way that somebody is trying to add 0.2 plus 0.1 and the system might be giving a result something like this 0.3000000000000000001. The computer might give it something like this. So why it is happening? Because the device would have been programmed in a way, and as we know that we are going to give this explanation that 0.2 cannot be represented in binary and 0.1 cannot be represented. So these are estimated, and the estimated addition is then also being shown as a result of this. So those computers who are not doing floating point numbers, who are not using floating point numbers, or those programs or those hardwares which are not using it, they show kind of things. So if you try kind of numbers and add, and even on Google, you see kind of result. I'll show you as I get time through it. So instead of fixed point notation, then what we can do, we can use floating point numbers. Do you remember what is this? What is this? Are you guys sleeping? Power of Power up? magnitude. What do you call this whole thing? So ये standard form होता है पता नहीं. और कोई? So exponent? ये तो exponent हो गया. तो ये आपकी scientific notation में आ रहा है ना number. So the decimal numbers are also stored in computers in the scientific notation. So what happens, like we have a magnitude over here and the exponent over here. So in other words, we call it mantissa and exponent. So the decimal numbers, like if we have 2.625, which you understand that you cannot show in your fixed point notations. So what to do with this? So you use floating point representation. Now in floating point representation, the programmer, while
designing this hardware or software, whatever, has to decide about mantissa and exponent. So actually what happens, because of the exponent, the decimal number will float either on the right side or on the left side, and we will be able to have either higher precision, you may say accuracy, because of the larger mantissa, or smaller accuracy, smaller precision because of the smaller mantissa, and high range of numbers or low range of numbers because of more bits for exponent and lesser bits for exponent. So we are going to actually use this floating point strategy for storing decimal numbers in computers. So what happens, out of our total bits, we give some bits to mantissa and some bits to exponent. And then from there it is calculated, the decimal point is calculated from decimal number to binary representation. And both the mantissa and exponent has to be in 2's complement. Now, for example, if I say that we have 1, 2, 3, 4, 5, 6, and 7 and 8 bits for mantissa, and likewise 1, 2, 3, 4, 5, 6, and 8 bits for exponent. Means the programmer has used 2 bytes for one floating point representation. जी ओके शराज, शरीद आपकी मैंने लगा दी हुई अटेंडेंस. Okay, sir. So that's how we represent our floating point, our decimal number in nowadays in computing. For example, we want to represent 2.5. So how we are going to do this in 8-bit, or let me write it a little bit like this: 2.5 in floating point. There's the word normalized is used, floating point normalized number. So I'll talk about this floating point normalization afterwards. Let's first discuss floating point. So 2.5 in floating point, or 2.5 as floating point using 8 bits for mantissa and 8 bits for exponent. So how we are going to do it? First step is to convert 2.5 into binary, and then 0.5 into binary, and then we can float the decimal. And the decimal float, the number of times we float the decimal will be our exponent. So we know that a positive 2 is 0, 1, 0. And 0.5 is equals to 1. Let me put it 1, 0. And we have total 8 bits
to be represented. So what I do is I can put remaining 3 zeros over here. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. You see, it is 8 bits. This is my 2.5. I'll give many examples, so don't worry about this floating point. And let me emphasize one thing, that out of the full batch, 75% of students miss out the marks in exams on floating point questions. 75% do it correctly. Maybe one part, two part, sometimes some attempt incorrectly all parts. And this is going to be a must question exam. So इसीलिए मैं बहुत slowly explain करने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि हम इनके questions को exam में miss out ना करें. ये इस तरह जैसे से हमने डेसिमल नंबर्स को रिप्रेजेंट किया, इस तरह से अब हम 2.5 को डेसिमल नंबर्स को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, तो उसे हम फ्लोटिंग पॉइंट कहते हैं. और अगर आपको याद हो कि डेटा टाइप्स में मैंने रियल और फ्लोटिंग पॉइंट का जिक्र किया कई दफ़ा प्रोग्राम में, तो वो फ्लोटिंग पॉइंट यहाँ पे डिस्कस हो रहा है कि कैसे डेसिमल नंबर फ्लोटिंग पॉइंट में कन्वर्ट होता है. तो अभी सर 2.5 ये तो 5 नहीं है जो आपने लिखा है. कहाँ पर ये जो 2.5 को आपने रिप्रेजेंट किया है बिट के अंदर, तो ये तो सर 5 नहीं है. 0000 हो गया और वो 10105 हो गया. नहीं, ये डेसिमल है और ये हमारा 2 है, 1 2 -4, और ये हमारा 1/2 है और आगे ये डबल होता जा रहा है. तो शायद आप डिस्कनेक्ट हो गए थे, आपने देखा नहीं ऊपर वाली पिक्चर पे, ऊपर वाले ये जो हमारा वाइट बोर्ड है, हाउ वी लेबल इट. सो दिस इज आवर डेसिमल पॉइंट. लेट मी पुट इट ओवर हियर ताकि और क्लियर हो जाए. Just to understand that the last 3 bits are for fractional and the leftmost 5 bits are for our number representation. So क्योंकि पहले मुझे 2 फाइंड आउट करना था, तो मैंने 2 को रिप्रेजेंट कर लिया और मैंने ये 0 इसलिए यहाँ पे रख लिया क्योंकि ये पॉजिटिव 2 था, तो इसलिए मैंने पहले +2 और उसके बाद 0.5 के लिए ऊपर वाले लेसन से हमें याद है कि वी हैव 1/2 ओवर हियर, सो वो एक बिट ऑन हो गई. नाउ लेट मी जस्ट पुट दिस होल थिंग ओवर हियर. 0 1 0 1 0 0 0 and 0, and we know that our decimal at the moment is over here. So what we have done up till now, we have converted +2 and we have converted 0.5. Now, what about exponent? Once we float it and we bring it into a floating point representation, just like scientific notation, I have to bring this decimal at this point. So how many decimal places I'm moving? I'm moving 1. I'm moving, let me show it from here, 1 over here and 2 over here. So it means my exponent is going to be 2. And how I represent this in my decimal point notation, like this: 0 0 0 0 0 0 1 and 0. This is my complete 2.5 represented as a floating point number in computer. Now let's convert it back. Let's check it back. Its calculation. If an examiner gives me the same number and asks me to convert it into a decimal number, 1 2 3 4 5 6 7 and 8, and give us the final answer as 8, a decimal number, 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6 7 and 8. So we know that this is 1 2 sorry
at the moment I'm not going to put anything over here. The answer we have is 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 0. I'll fill all with leading zeros. And we understand examiner is saying this is a floating point. This is a floating point number. Convert into denary or decimal number. And this is the exponent given to us by the examiner. So how we are going to convert? We understand because examiner is saying it is a floating point number. So it means our decimal is over here. We have to assume it. And the exponent is the first step that we need to convert. Exponent. This is our exponent. And if this floating point is in 2's complement, is 2's complement mentioned by the examiner, for example. So this is 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, and minus 128. So we have a plus 2 as our floating point exponent. So this means that I have to float my decimal 2 places on the right side. So I'll move it 1 and 2. So it will shift over here. Now I'm left with 1 over 2, 1 over 4, 1 over 8, 1 over 16, 1 over 32. And here I'm left with 1, 2, and minus 4. So this is my integer value that is representing 2 because this is 0, so it is a plus sign over here. And here only 1 over is on, so my answer is 2.5. So 1 mark will be given for my exponent representation, 1 mark for showing the correct float of the decimal, and 1 mark will be given for the final correct answer in its calculation. So this is it. Believe me. 0.5 समझ आया कैसे आपने represent किया? ये जो डेसिमल की राइट साइड पर है उसको एक प्रोग्रामर ने कोड किया हुआ है कि ये हाफ 1/2, 1/4, 1/8, 160, 132 इस तरह से रिप्रेजेंटेशन होगी और लेफ्ट साइड पे 1248 जैसे कि हम इंटीजर्स को 1248 करते आए थे डेसिमल नंबर की रिप्रेजेंटेशन में ये 124 होगा तो क्योंकि 1/2 लेबल वाली बिट ऑन है तो इसलिए ये 0.5 को रिप्रेजेंट कर रहा है 1/2 मीन्स 1/2 you don't know, I think you know, it is 0.5. तो ये हमारा इस तरह से आंसर बनेगा ठीक हो गया सर और ये आपने राइट मूव किया ना 2 डेसिमल्स जी क्योंकि हमारा ये जो एक्सपोनेंट था ये पॉजिटिव 2 था ये वाली बिट ऑन नहीं थी अगर ये नेगेटिव होगा तो हम नेगेटिव it is same as we have something in scientific notation 2.5125 into 10 raised to power 3 so you know that it actually the number is 2512.5 ऐसे ही है ना और अगर ये 2 raised to 2.5125 minus 3 होता तो आप क्या आंसर देते 0.05125 और आपका जो डेसिमल सॉरी 0.0025125 सो आपका डेसिमल 0.5 से मूव होके यहाँ आ गया सो 3 डेसिमल प्लेसेस वो लेफ्ट में मूव हुआ तो 1 2 3 इस ये आंसर आ जाएगा आपका 0.0 so you the same is here the exponent is doing either floating the decimal point on the left side or the right side तो आपको ये आपको देखना है कि when you are what are you asked to do if you are asked to convert 2.5 into binary then you bring your decimal wherever it is to leftmost bit के right side के ऊपर and when you are converting a floating point back into denary then you have to see that the decimal number floating point ka exponent is positive or negative so accordingly you will move to the right side or the left side same as in your maths सर रिपीट कर देंगे आप
सर ये काफी कंफ्यूजिंग था, ये जो जी? आपने अभी बोला काफी कंफ्यूजिंग था. Okay, ji, let's do some more examples. Like I want to represent 6, a positive 6.625 in a floating point with 8 bits for mantissa and 8 bits for exponent. Waka, you asked what is mantissa and what is exponent. So when we are representing our floating point, the decimal number as floating point, so this is known as mantissa and these bits are known as exponent. So exponent is the part of floating point which tells that how much to float. Decimal is floating how much to actually get the final floating point or actually get the decimal number back. And mantissa is telling us that part which actually contains our fraction and the integer number itself. So as I said in the scientific notation, when we write something like 2.1 into 10 raised to power something, so this is the part which is telling how much decibel will float in the mantissa. So you can understand this is mantissa and this is exponent. So how to do it this? Now very carefully look at the steps. Now first of all find out the 6. How do we represent plus 6 in decimal or as a binary number? So decimal is, you understand, is 0, 1, 1, 0. So we need 4 bits actually to represent a plus 6. You understand that. Or if I label it 1, 2, 4, and let me put minus 8 for 2's complement. So this is equals to plus 6. You understand it. Now after this, our decimal number is going to be converted. So this is our first step. Second step is how to convert 0.625 into a decimal number, a fraction, binary fraction. So very easy. You put 0.625 here, then multiply this with 2. So this will become 0, 5, and 2, and 0.1. So 2 multiplied by 0.625 gives us 1.250. So because here we have a 1, so I write 1 over here. And then I'll take this 0.25 back over here. And I'll again multiply this with 2. I'll carry on this until I find 1.00. So when I multiply 0.250 with 2, I will get 0.5. So because here I have 0, so I will put 0 over here. And this 0.5, I will bring it over here. 0.5 multiplied by 2. And you know that it is 1.0. So as you know, I got 1 over here. So I'll put 1 over here. And here we have 0. So here I stop my calculation for 0.625 conversion into binary. So what I got is, starting from this first one, I will place this one over first, 1, 0, and 1. Because I want 8 bits for my mantissa, so I'll put leading zeros
I have already 7 bits, so मैं एक 0 और लगा सकता हूँ यहाँ पर. So this is 1 over 2, this is 1 over 4, and this is 1 over 8. सर ये 2 से मल्टीप्लाई इसलिए करते हैं क्योंकि एक्सपोनेंट 2 है इसका. ये बेस 2 है ना, इसलिए हमने इसको 2 से मल्टीप्लाई किया है. So this is one way of calculating. सर सॉरी This is one way of calculating your decimal fraction into binary. Yeah, there are other ways you can use this method also. मैं अभी आपको वो भी थोड़ा सा चेक कराता हूँ. So now ये हमारे पास नंबर आ गया. Now this number needs sorry, the decimal over here is needed to be floated to this point, like as explained earlier. So how many decimal places I have to float this on the left side? 1, 2, and 3 decimal places I have to. So it means my exponent is going to be 3. And when I represent this in decimal, it will be in a binary number. My exponent will be in 8 bits 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1. So this is exponent. सर 3 क्यों है? Sorry, सर ये 3 क्यों किया आपने? 3 क्यों किया है? देखिए मेरा डेसिमल कहाँ है, थोड़ा सा इसको मैं जूम आउट कर लूँ. आजकल मेरी स्क्रीन, ओके, देखिए हमारा एक्चुअल डेसिमल कहाँ था, ये. इसको मैंने साइंटिफिक नोटेशन की तरह बिल्कुल लिखना है, जिसमें साइंटिफिक नोटेशन लास्ट डिजिट के बिल्कुल लेफ्ट पे होती है. तो इसी तरह से यहाँ पे भी हमें करना है. तो इसको जब मैं फ्लोट करके यहाँ लेकर आऊंगा, तो ये कितने डेसिमल प्लेसेस मूवमेंट किए मैंने, 1, 2 और 3. तो इसलिए हमारा एक्सपोनेंट 3. समझाई? तो अब ये एक्सपोनेंट क्योंकि 3 है, तो इसको बाइनरी में जब प्रेजेंट करूंगा तो वो इक्वल टू दिस होगा. तो मेरा फाइनल आंसर क्या है, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 0. और ये है मेंटेसा. और एक्सपोनेंट में लिखूंगा 0, 0, 0, 0 and 0, 0, 1, 1. So this is my exponent. Now let's do another example. If I want to convert minus 6.625, so this is also not difficult. What you do is, our original positive number was plus 6.625 was this one over here, 0. 0, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 0, and my decimal was here. My decimal was here. Now I convert this into negative with 2's complement, and you remember 3 or 4 methods. Wait, please. So to convert this into negative number as 2's complement, you know there were 3 methods. And one method was from the left side, right side you start when first on bit comes. After that, flip all, the quick method. So this is 0, 1, and now we'll flip. So this is our negative minus 6.625. Now we'll float it 3 decimal places. So our exponent is definitely again going to be a 3. So our answer will be 1, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 0. And we know the decimal is over here. And our exponent is 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 1.
1 2 3 4 5 6 7 8 जी, ये है फ्लोटिंग पॉइंट की कन्वर्जन। या देयर इज अ मिस्टेक, आई सेड कि हमें सिर्फ ये दो फ्लिप नहीं करनी है, बाकी सारी फ्लिप करनी है। सो जब मैंने फ्लिपिंग की तो मैंने इसको भी गलत लिख दिया, ये 0 आना ये। तो ये दो तो एज इट इज आ गए 0 1 और फिर 1 0 1 0 0 0 1। भाई ये मिस्टेक हुई है इसमें। और माइनस साइड तो 1010 चाहिए क्योंकि माइनस से प्लस 2 होगा तो फिर एक मिनट माइनस आपकी आवाज कट रही है। माइनस से प्लस 1 कर रहे हैं। एक मिनट, मुझे ना थोड़ा सा आइडिया नहीं हो रहा आप क्या कह रहे हैं। जस्ट होल्ड ऑन, एक मिनट। आप में से कोई इसको, अगर किसी के पास कोई डिजिटल पेन है, अगर तो वो एनोटेट करना चाहे तो एनोटेट कर लो खुद से, या माउस से एनोटेट कर लो। जो चीज़ कह रहे हो मैं मुझे पता नहीं चल रही यहाँ पे। सर कह रहे हैं कि ये -6.625 ही बन रहा, -7 बन रहा है जो आगे वाला पार्ट है ना, जो मेंटिस है। हाँ जी। ये -7, लेट मी चेक। मैंने ये ऊपर 6 नहीं था क्या? ये ऊपर हमारे पास देखते हैं 0 1 1 0 1 0 1 0 और ये एक्सपोनेंट था 3। तो -6 पॉइंट, तो 0 1 1 0 1 0 1 0, तो इसको फ्लिप किया मैंने। तो जब फ्लिप किया तो 0 1 1 1, ये 0 1 हो गया, ये 1 0 हो गया, ये 0 1 हो गया, ये 1 0 हो गया, ये 1 0 हो गया और ये 0 1 हो गया। हाँ ठीक है, हमारी कन्वर्जन ठीक है ये। तो अब इसको बैक कन्वर्जन कर लेते हैं इसमें जैसे फिर। फर्स्ट 1 बिट के बाद फ्लिप करते हैं ना, सॉरी, फर्स्ट सर वन को, टूज कॉम्प्लीमेंट में फर्स्ट 1 बिट के बाद करते हैं हाँ कन्वर्जन, जो लेफ्ट फ्लिप साइड से जो करते हैं पहली फर्स्ट बिट 1 आएगी ना आपने उसके, सारे ही करते हैं, सारे तो नहीं किए। बात करते हैं सर आपने, लेकिन सारे देखो मैं सारे ही करते हैं सर। मैं दोबारा करता हूँ। 0 को 1 कर दिया, 1 को 0। देखो बताता हूँ, हमारे पास जो आंसर था वो ये था, ये है ना हमारे पास आंसर। और लेट मी इरेज इट। ये हमारे पास था क्या चीज? 0.625, 6.625 यही है ना। ना अभी हमारे पास टाइम है, ये क्यों अभी से आ रहा है यार। ओके ना, सर मेरा ख्याल है जो हम गलती कर रहे हैं ना, वो है कि डेसिमल से हम टूज कॉम्प्लीमेंट जो फ्लिपिंग करनी है ना, वो डेसिमल पॉइंट के बाद, मतलब जो होल नंबर वाला पार्ट है ना, सिर्फ उसको फ्लिपिंग करें। नहीं एक मिनट हम ठहर जाओ डेसिमल पॉइंट के सब, बाद वाली फ्लिपिंग नहीं करनी चाहिए। वेट करो। ये हमारा डेसिमल कहाँ था? डेसिमल हमारा फिर से 0 1 1 0 के बाद यहाँ था, ठीक है। तो अब मैंने फ्लिपिंग की है तो ये 0 ऐसे ही आ गया, ये 1 ऐसे आ गया, ये 0 मेरे पास 1 हो गया, ये 0 हो गया, ये 1 हो गया, ये 0 हो गया, ये 0 हो गया और ये 1 हो गया, और डेसिमल हमारा यहाँ पर आ जाएगा। अच्छा, अब मुझे वापस इसको करना है किसमें? डेसिमल नंबर में। लेट्स सपोज मेरे पास ये, मैं कह रहा हूँ कि ये फ्लोटिंग पॉइंट है, इसको डेसिमल में कन्वर्ट करना है। तो मैं डेसिमल में कैसे कन्वर्ट करूँगा? पहले मैं फ्लोट कर लेता हूँ, मेरा डेसिमल वापस आ जाएगा 3 डेसिमल प्लेसेस के बाद यहाँ पर, ठीक है। और इसको डेसिमल में कन्वर्ट करने के लिए पहले मैं इसको वापस टूज कॉम्प्लीमेंट में लाऊं, या मैं -128 और सॉरी -128 क्यों कह रहा हूँ मैं इसको, ये है मेरे पास 1 2 4 और -8। सो इसको मैं ऐड करता हूँ, ये है -8 और +1, और ये मेरे पास रह गई यहाँ पर
1/2, 1/4 और 1/8. So plus 1/2, सॉरी नहीं, प्लस 1/2 नहीं, 0 प्लस 1/4 प्लस 1/8. तो इस तरह से हम इनकी एडिशन करेंगे तो फिर हमारे पास आंसर आएगा. लेट मी राइट इट डाउन फॉर ईच. -8 ये आ गया मेरे पास, प्लस 0 प्लस 0 प्लस 1 प्लस, ये जरा मुझे इन बच्चों को जरा अभी रिमूव करना है. ओके, प्लस 0 प्लस 1/2 प्लस 1/4 प्लस 0. नो, इसको आप सारे को ऐड करके देखें तो फिर क्या आंसर आता है आपके पास. इधर से आएगा आपके पास सर 1/8 है, 1/2 की जगह. थैंक यू. इसकी ये आ गया -7 प्लस 0.5 प्लस 1/8 कितना होता है? सर वो 1/4 Sir, 1/2 आपने पे और जीरो किया है 0.125. 1/4 प्लस 1/8 आप 1/2 जी? लिख रहे हैं. सॉरी, 1/4 सर और 1/8. 1/2 की जगह 1/4 है और प्लस 1/8 है. सर में अभी जी, टेंशन हो ये गई बनता है. है -7.325. ये है, एक मिनट सुनो ना, ये -7 प्लस 0.25 प्लस 0.125. तो -7 में से आप जब प्लस करेंगे, -7 में प्लस करेंगे 0.25 प्लस करेंगे 0.125, तो आपके पास आंसर बना -6.625. सही है मेरा आंसर. असल में आपने वेट नहीं किया ना, ये कैलकुलेशन में आपको समझाता, आप डायरेक्ट शुरू हो गए सर गलत है गलत है गलत है. तो ये अब इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में हम दोबारा से इसी डिस्कशन को करेंगे कि आपको नेगेटिव नंबर जब आता है तो फिर आपकी उसकी कैलकुलेशन कैसे होगी. तो जो जो बिट्स ऑन है उनको प्लस के साथ लिखते थे. -8 बिट ऑन थी तो वो लिख दी मैंने, फिर 1 बिट ऑन थी वो मैंने लिख दी यहाँ पर प्लस के साथ, और फिर 1/4 1/8 ऑन थी वो लिख दी. इनको मैंने कैलकुलेट किया तो मेरा यहाँ पर आंसर -6.625 आया, दैट वी वांटेड टू कैलकुलेट. ठीक है, नेवर माइंड, इसको हम अभी हमने ठीक है बहुत सर. प्रैक्टिस करनी है. तो